So, hello everyone. Very good evening to all, and welcome to the class. So today we are going to see the GOC chapter, right? So this is a very important chapter for all of us, ठीक है? तो GOC हम लोग करने वाले हैं आज. बहुत important chapter है हम लोगों का ये GOC. तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट कि क्या क्या चीजें हम लोगों को इसमें कवर करना है, राइट? सो इन फर्स्ट 10 to 20 minutes, basically we are trying to see some important topic of this chapter, and after 20 to 25 minutes we are going to see some questions, right? So we are going to see some questions like JEE previous year questions. Okay, so यही रहने वाला है हम लोग का पूरा क्लासिफिकेशन आज का. So सबसे पहले we are only going to see the topics in revision type, because all we already discussed all this topic in detail in classes. So we are just trying to एक बार रिवाइज करेंगे एक बार हम लोग बस, और नथिंग एल्स. Okay, so the first is the IUPAC system of a nomenclature, right? So how will you write the naming? So for naming there are several rules, but the general formula of naming is you have to use this only. Like first of all you need to use the root word, right? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, that is root word. Root word indicates the number of carbon atom in the parent chain, कि how many carbon atoms are present in a carbon chain, right? And similarly before the root name we use the prefix, that is prefix, primary prefix and secondary prefix. So primary prefix basically define whether the compound is cyclic or not, right? If the compound is cyclic then add cyclo before the name, ठीक है? Then क्या add करना है, cyclo नाम को add कर देना है before the name. And similarly, if the what the secondary prefix denotes, तो secondary prefix हमें बताता है whether there is a substitute with locants. Like if in a carbon chain chlorine is present, bromine is present, iodine is present, some methyl group is present, then we can use as a substitute, right? So substituents with the locants. So this is all about the prefix, like primary prefix and secondary prefix. In the next we have primary suffix and secondary suffix. So in primary prefix basically determine whether the compound is saturated or unsaturated. If the compound is saturated we use ane. If the compound is double bond then we use ene. If the compound is triple bond then we use ine. Similarly secondary suffix tell us about the main functional group, ki which functional group are present. If for example if OH are present then we use all. Similarly for aldehyde we use al. For carboxylic acid we are using oic acid. So these are the basic structure for the nomenclature. I hope this is clear to everyone. And this thing also clear na, ki number of carbon 1 is called myth. If the number of carbon is 2 then it is called eth. Similarly for 3 prop and 4 but. Okay, so this is all about the quickly revision of the IUPAC, that how will you write the name. Okay, now let's see the next thing, that is the isomerism. So basically in GOC we study two different kind of isomerism. The first is structural isomerism and the second is stereoisomerism. Okay, so structural isomerism means the isomerism which is arise due to change in the structures only, right? They are called the structure isomerism. So they are further classified into the four types, that is a chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, and metamerism, right? So these four are the different type of isomerism we have. That is the chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, and the metamerism, right? So ये चारों आप लोगों को याद रखना है. Done? I hope this is clear to everyone. Hmm? Chalo, very good. Now, let's talk about the stereoisomerism. कि what do you mean by this term stereoisomerism? कि stereoisomerism हम लोगों का क्या होता है? So basically stereoisomerism are classified into the two main types, that is a geometrical and optical. So stereoisomer are of two types, that is a geometrical isomer and the optical isomer. So let's see what do you mean by this thing, geometrical and the optical isomerism. So geometrical isomer further classified two types, that is a cis and trans position, right? Cis alkene, trans alkene. So we already studied this thing. And in optical isomerism, we talk about the chirality of the carbon, whether the carbon is a chiral or not, right? So these are the important things. Okay. So isomerism ये clear हो गया. क्या क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, चेन, पोजीशन,
फंक्शनल मेटामेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे करेंगे? दैट इज द ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव द reagents, right? That is the reagent. So first reagent is electrophile. So we all know what is electrophile, right? Electrophile means they are electron loving species. Why they are electron loving species? Because they are electron deficient. So they are itself electron deficient. That's why they are electron loving species. So this thing you need to remember. Now the second important thing is they having the vacant orbital of the low energy level. So they also have the vacant orbital. So let's classify electrophile. So electrophile are of three types. ठीक है, कौन कौन से थ्री टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? सो दैट इज अ चार्ज्ड, electron deficient and the vacant orbital. So we have a three type of electrophile with us, right? Charge means यानी any species having positive charge, right? जिस पे भी positive charge होगा that definitely उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो उसको तो हम बोलेंगे दे आर द चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, राइट? Similarly, if we have an electrophile like electron deficient, it means they having less than 8 electron, their octet is not completed. For example, BH3, AlCl3, BCl3, RCHO, RCOR. In this, their octet is not completed for the central metal. So these are also known as electron deficient. And the next is the vacant orbital. For example, in FeCl3, Fe having the vacant orbital, phosphorus having the vacant orbital, right? So these are also classified as electrophile. Now, one important note here, many of the students getting confused, like Na and calcium also having positive charge. So they are also electrophile. No, they are not electrophile because they, they have an extra electron. They have a tendency to lose electron. They lose electron to complete their octet, right? So these are not electrophile, right? They are metals. So Na and Ca are not electrophile as they have a complete octet and have no vacant orbital also. So this is not a electrophile. So I hope this is clear to everyone. Electrophile वाला part clear हो गया सबको? Done? चलो. Now move to the next. What are the nucleophile, right? So nucleophile are nucleus loving species, right? Nucleophile are nucleus loving species. They are also electron rich. So they are nucleus loving species, electron rich, and they having lone pair or pi electron cloud, right? So they having lone pair or pi electron cloud having, right? So nucleophile को भी तीन में classify किया गया है. The first one is a charged, the second one is a lone pair, and third one having pi electron cloud, right? So they having the pi electron cloud. So charged की अगर मैं बात करूं, so देखो जैसे न्यूक्लियोफाइल में क्लोरीन नेगेटिव, we have OH negative, we have NH2 negative, we have HSO4 negative, we have. So these all are negatively charged. It means they are nucleophile, they having extra electron, they wants to donate. That's why they are called nucleophile. Similarly, in the following pair like H2O, NH3, we all know oxygen having two lone pair, nitrogen having one lone pair. So they having lone pair of electron. That's why they also behave as a nucleophile. In the third case, they having a pi electron cloud. For example, whenever there is an unsaturated compound, pi or triple bonds are present, they having pi electron cloud, so which is loosely bounded and they can easily donate this electron. So this is also known as a. So I hope electrophile and nucleophile are clear to each other. Chalo. Now, let's move to some different types of effect that we already studied in this chapter. That is the first one is the inductive effect, right? What is inductive effect? So basically, this polarity caused in the sigma bond, right? The polarity caused in the sigma bond is known as inductive effect. And due to the electronegativity difference between atoms, they are also known as progressive or transmission effect, right? They are also known as progressive or transmission effect. Now, let's see, uh, for example, that is मान लो A और Z है. Z is a sum group. So if the Z atom is more electronegative, then it shifts the electron towards it, है ना? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा. So they tends to shift the electron towards itself if Z is more electronegative, right? Now, this is also called the permanent effect, and this is the weakest effect, right? Because its significance till 3 to 4 carbon only.
और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीन्स अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, तभी बोला है इट इज सिग्निफिकेंट टिल 3 to 4 कार्बन only, right? So this is all about the inductive effect. The first thing is inductive effect arise when there is a electronegativity difference between the two atoms. It means polarity caused in sigma bond. Next, they are also known as a propagative and transmission effect because they can propagate from one carbon to another, another to another carbon atom, right? Next, it is a permanent effect and it decreases with the distance. So it is depend upon the distance. Now, the next thing we already study is hyperconjugation, right? So what is this hyperconjugation, beta? So basically, in resonance, delocalization of pi electron takes place, right? Similarly, when the delocalization of sigma electron takes place, then this is called hyperconjugation. So this is a sigma bond orbital overlap with the p orbital, or we say sp3p overlapping took place. Now, more the number of alpha hydrogen, more the hyperconjugative structure, and more will be the hyperconjugation effect. यानी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, more the number of alpha hydrogen, more the hyperconjugative structure, and more will be the hyperconjugation effect. Now, hyperconjugation is also observed in कार्बोकेटायन. तो हाइपरकॉन्जुगेशन को और कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? तो hyperconjugation is also observed in कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन में भी हाइपरकॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, कैसे? देखो. So let us assume if we have this carbocation, right? This is H, this is another methyl group, right? So, and this is a carbocation. So this is called alpha carbon, right? So you need to calculate how many alpha carbon they have. If more the number of alpha hydrogen, more the number of alpha hydrogen, more the hyperconjugative structure and more will be the hyperconjugation effect. तो ये एक सिंपल सा हम लोगों को ध्यान में रखना है. For example, if someone ask out of CH3, C positive, and this is CH3, and this is again CH3, right? So how many alpha carbon they have? They have one alpha carbon, two alpha carbon, and three alpha carbon. So three alpha carbon and how many hydrogen? Alpha hydrogen. So they having nine alpha hydrogen. So they having nine alpha hydrogen, and due to this only they are very much stable. तो इसके चलते ये क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. They are very very much stable. हम्म. चलो, सो दे आर वेरी मच स्टेबल. सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये तो हो गया इसकी स्टेबिलिटी की बात. अगर आप नेक्स्ट देखो इसमें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई? एक तो ये हो गया. नेक्स्ट अगर आप देखोगे अल्फा इज इक्वल टू 9 अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट अगर कोई आपसे ये बोलता है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन दे हैविंग? तो दे हैव ओनली वन अल्फा कार्बन ना. सिर्फ यहीं पे तो है अल्फा कार्बन. इट मींस दे हैविंग ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. सो दे हैविंग ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन. तो इसके पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. क्लियर है ये? जल्दी से बताओ. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो. Now, the next we have mesomeric effect or we say resonance effect. So in this the displacement of electron in the molecule via resonance. यानी mesomeric effect और resonance effect को हम ऐसे लिख सकते हैं that is plus m और plus r effect and minus m and minus r effect, right? So mesomeric effect या resonance effect को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस एम प्लस आर बोल लो, माइनस एम और माइनस आर ले लो. प्लस एम और प्लस आर कब होता है? तो प्लस एम एंड प्लस आर जो होता है हम लोगों का ना, वो कब होता है बेटा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन वी हैव प्लस आर इफेक्ट, एंड वेन एवर वी हैव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देन इट शो माइनस आर और वी से माइनस एम इफेक्ट, right? So this is very very important thing which you need to understand. When they show plus m effect, when the electron donating group are present, I'll show you which group is called electron donating group, right? So ये दो पॉइंट क्लियर रखना. whenever donating group are present they call plus m effect, right? Now let's see how this plus m effect or plus r effect actually work. Here we have a phenol, OH is a electron donating group.
Why OH is a electron donating group beta? Because they are having lone pair of electron on the oxygen atom. So due to the presence of lone pair of electron on the oxygen atom, they are called electron donating group. So they donate the electron. तो होगा क्या? If you observe very carefully, this is called the resonance diagram, right? This is called resonance diagram. So you can observe at every ortho and para position. This is called ortho position. This is called para position. This is again called ortho position. So at every ortho and para position, they have a negative charge. It means वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहीं पे अटैक करेगा. तो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट हम इसी को बोलते हैं. ठीक है, तो कोई भी पूछे व्हाट इज प्लस एम प्लस आर, सो आपको इसी तरीके से डिफाइन यहाँ पे करना है. Done. Now, what is minus M or minus R effect? So it withdraw electron from the carbon chain and attach atom has a pi bond with more electronegative atom. ठीक है? So it withdraw electron from the carbon chain and attached atom has a pi bond with the more electronegative atom. ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक withdrawing group लग गया. Here NO2 is in a withdrawing group. So they decrease the electron density at all ortho and para position. As you can observe, at all ortho and para position, they having negative, they having what kind of charge they having beta? They having positive charge. So they having positive charge. What does it indicate? It indicate that they having less number of electron here, right? तो प्लस का चार्ज आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी है. तो इसको हम बोलेंगे कि ये जब भी विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा, एंड व्हेनेवर डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा. ओके. Now, so these are the list of the plus M and plus R effect groups. So for example, plus R or plus M effect group like OH we have NH2, NR, OR, OCOR, NHCOR, similarly CH3. So these all are called plus M effect. They are called electron donating group. And minus M or minus R effect which will show withdrawing group like NO2, NR3, SO3H, CF3, CCl3, COH. So these also minus R or minus M effect, right? So I hope this is clear. Am I clear to everyone? Done? Good. Now let's see some questions. सभी को ट्राई करना है क्वेश्चन, ठीक है? Everyone, is there any doubt? कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो. Otherwise, we'll start with the question solving. ठीक है? Now the first question is you have to identify the incorrect question. ठीक है? You have to identify the incorrect statement regarding ethine. So, what are the incorrect statement regarding ethine? ठीक है, इथाइन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हम लोगों का इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. ठीक है, बताओ भाई. एवरीवन, द फर्स्ट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन. हाँ, एक आंसर आया. बी बोल रहे हैं बच्चे. बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज. बेटा दिस इज ट्रू. इथाइन, इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, this is ethine na. So they having hybridization. How will you find hybridization? It's a very simple, that is sigma bond plus lone pair. This is how we can find the hybridization. So here the sigma bond is how many sigma bond they form? One with hydrogen and only one with carbon, because in triple bond two pi bonds are present. Pi bonds are not participate in hybridization. Only one sigma bond they having. So they having two sigma bond and zero lone pair. So two means what? Sp. So they having sp hybridized. So this statement is correct, right? This statement is absolutely correct. They are asking द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि यहां से बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. ये बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. बताइए एवरीवन. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, नेक्स्ट बताओ.
Yes, anyone? देखो, पहला, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन इथीन, इज दिस करेक्ट? कार्बन कार्बन bond in ethine is weaker than ethene. This is ethene. So here we have in a triple bond. Here we have in a double bond. So which bond is strong? Hmm? Obviously, this is a weaker, right? Triple bond is a stronger. Okay. So the carbon carbon bond in ethine is weaker. Yeah, this is the incorrect statement. Okay. This is correct. CC bond in ethine is shorter. Obviously, triple bond is shorter as compared to double because double is shorter as compared to single. Ethine is linear. Yes, one they having sp hybridization, so they are linear. So which statement is incorrect, beta? That is option A. So option A will be incorrect. Got it, everyone? Hmm. Chalo. Next. In the given compound, the number of secondary carbon atom is, right? So you have to identify in the given compound the number of secondary carbon atom. किसमें से secondary carbon atom कौन सा है? Everyone. Yes. You have to identify the secondary carbon. In the given compound, the number of secondary carbon atom. कितने secondary carbon atom है इसके अंदर? Tell me fast. Yes. Secondary carbon atom. देखो, ऑब्जर्व करो केयरफुली। ए बोल रहे हैं बच्चे, टू। ओके, अभी चेक करते हैं। दिस इज अ प्राइमरी कार्बन बिकॉज दिस इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, राइट? दिस इज व्हाट अबाउट दिस? तो दिस इज अटैच टू CH3, एंड अटैच टू दिस C, so this is secondary carbon. So one secondary carbon atom is here, and another we have, this is CH3, this is CH3, so this is also a secondary carbon. दिस इज टर्सरी कार्बन बेटा, दिस वन इज टर्सरी बिकॉज CH3 ऊपर है, एक CH इधर है, एक CH इधर है, तो दिस इज अ टर्सरी. दिस इज ओनली द सेकेंडरी कार्बन. दिस इज ऑल्सो अ टर्सरी, राइट? दिस इज ऑल्सो टर्सरी, एंड दिस इज प्राइमरी. सो वी हैव ओनली वन वन सेकेंडरी कार्बन एटम. मधुकर ने बोला है दैट इज ए. नो बेटा, नॉट ए, बिकॉज लुक केयरफुली ना, only this is called secondary carbon atom na, because this is attached to this carbon and this carbon, so this is secondary. These are tertiary because yahan bhi CH3 laga hai, either we have carbon, this side also we have carbon, so this is a tertiary carbon, right? So we have only one secondary carbon here. Done? Is this clear to everyone? Yes, tell me fast. Okay, now tell me, the next is nitration of benzene involve the following step, right? That is this, and statement 2 they are saying use of Lewis base promote the electrophilic substitutions in benzene. सो नाइट्रेशन में क्या ये होता है क्या कि वी हैव एन HNO3 एंड HNO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म NO2 इलेक्ट्रोफाइल, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन तो होगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन तो नाइट्रेशन में बिल्कुल होता है बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल आर फॉर्म्ड देन ओनली दे अटैक टू द बेंजीन रिंग. तो इलेक्ट्रोफाइल तो बना, राइट? NO2 प्लस. नाउ द स्टेटमेंट सेकेंड इज यूज ऑफ लिविस बेस प्रमोट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिविस एसिड यूज कर रहे हो, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वगैरह कराते हैं तो वहां पे लिविस एसिड को यूज करते हैं. सो वी कैन नॉट से दिस, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज द स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट वन जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट, राइट? स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है. सो ओनली स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा, स्टेटमेंट टू हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है. डन? चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट व्हाट वी हैव,
right? So in the above chemical reaction sequence, A and B respectively are. What are A and B in this? Fatabat, everyone. राइट. सो दिस इज एन ओजोन लिसिस रिएक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन लिसिस रिएक्शन हो रहा है. सो ऑप्शन डी दैट इज O3. तो यहाँ पे O3 में O लग गया, एंड फिर उसका हमने किया है NaOH, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. तो ये हम लोग का पूरा फॉर्मेशन होगा. Now, just wait for a second. And now I'm going to share some questions on the basis of inductive effect and IUPAC naming and all this thing, right? So अभी इस क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग. तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, मैं अभी आपको शो करता हूँ क्वेश्चंस. उस क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है. ओके. बेटा स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, है ना? चलो. सो टेल मी फास्ट, फटाफट. क्या बोला है क्वेश्चन में? द क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट? सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, राइट? सो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे होगा. ओके, बताओ. So here CHO is an electron withdrawing group. So this is the structure number one. This is the structure number two, and this is the structure number three. So according to you, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? Everyone, फटाफट बताओ. कौन होना चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल? देखो, I'll explain you. Here we can observe कि यहाँ पे कार्बन आयन बना है नेगेटिव. दिस इज अ कार्बोकटायन विथ सेकेंड डिग्री, एंड हेयर देर इज नो कार्बोकटायन एंड कार्बोन आयन, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. क्या अंडरस्टैंड करना है हम लोगों को यहाँ पे? कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सो वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी, राइट? तो हम लोगों को ना यहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करना होता है. कि स्टेबिलिटी वाइज अगर मैं देखूं तो मेरे पास कार्बोकटायन है, वी हैव एन कार्बो एनायन, अनेक पे कोई भी चार्ज नहीं है. तो कौन ज्यादा स्टेबल हमारा यहाँ पे होगा, कौन नहीं होगा? तो बेटा अगर ध्यान से अगर आप देखो, राइट? सो जो ऑप्शन थ्री है, दैट इज थ्री, उस पे कोई चार्ज नहीं है, राइट? अगर थ्री को आप देखो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप क्या बताओगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? थ्री. एंड हाउ विल यू से दैट? बिकॉज जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, व्हेन वी स्टडी रेजोनेंस, तो हमने पढ़ा था कि नॉन पोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो नॉन पोलर है ये, क्या है बेटा? दिस इज नॉन पोलर इन नेचर. तो नॉन पोलर होने के चलते दे आर वेरी वेरी स्टेबल. तो ये काफी ज्यादा स्टेबल भी है. तो नॉन पोलर भी है, और बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, ये स्टेबल भी है. सो सबसे ज्यादा तो थ्री हुआ. देन कम्स टू. टू क्यों? अगर आप बात करो टू और थ्री की, तो देखो कैसे देख सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, देखो. सो नाउ ये हो गया हम लोग का स्टेबिलिटी का ऑर्डर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर. हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर? कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं गिवन स्ट्रक्चर के लिए? ध्यान से बताओ.
हाउ मेनी? सो वी यूज अ सिंपल फॉर्मूला हेयर बेटा. कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? तो वी यूजिंग अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज 2 raised to the power 3. राइट. सो हाउ विल यू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द बेसिकली द स्टीरियो आइसोमर. सो हाउ मेनी काइरल सेंटर दे हैव? So they having 3 chiral center, right? कितने chiral center they having? They having 3 chiral center. So we can say that 2 raised to the power 3. That is 2 raised to the power is nothing but is equal to 8. So we can say that 8 is the correct answer, right? So always whenever they asking, you have to calculate the stereo. They have to calculate the number of stereo isomer. You need to calculate the stereo center. So here in this case, we have total 3 stereo center. So 2 raised to the power 3, that is equal to 8. Okay. Now, this is again a question very much similar to the first question. That is, they are asking the relative stability of the contributing structure, right? What are the relative stability of the contributing structure? That is a structure we have one structure, two structure, and three structure. So we all know that firstly, higher the number of bonds, right? Higher the number of bonds, or say complete octet जिसका complete हो, their higher will be in the stability. So for this अगर आप ध्यान से देखो, so maximum number of bonds कौन बना रहा है? That is A, right? So they having maximum number of bond, they doesn't have any positive or negative charge on it, right? So they are the most stable. Now apart from the first, let's see the second one, right? कि फर्स्ट के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होगा. सो फर्स्ट एंड देन कम सेकंड. व्हाई सेकंड? बिकॉज we know that the negative charge is situated over the more electronegative atom, right? So ये भी हम रेजोनेंस में पढ़ते थे कि whenever the negative charge is situated to the more electronegative atom, they are more stable. कि जब भी नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ज्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पे देखो कार्बन और पॉजिटिव चार्ज चला गया ऑक्सीजन पे, तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इट इज लेस स्टेबल. तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे रेजोनेंस के रूल पे ही क्वेश्चन है. ठीक है. गुड. नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द पाइरोल. कि पाइरोल का अगर मैं बोलूं बेस स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है. तो सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा बेटा? तो ध्यान से समझो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि पाइपरडीन, फिर पायरेडीन और पाइरोल, ये होता है हम लोग का बेसिक कैरेक्टर. और किस तरीके से हम लोग इस बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं? तो हम हमेशा ऐसे ही बताते हैं बेटा कि ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा. तो इस चारों ऑप्शंस में अगर आप देखो, तो ये हमारा हो गया पिपरडाइन, और ये हो गया हमारा पायराडीन, एंड द अनदर इज पाइरोल. तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का अगर मैं बात करूं, तो सबसे कम स्टेबल पाइरोल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो देखने को मिल रहा है वो पाइपरडाइन होगा. ठीक है. सो ये हम लोगों का यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल के आ जाता है. ठीक है. Now, they are asking for the given compounds, what is the correct order of increasing pKa value? pKa वैल्यू का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ Ka, राइट? मतलब आपको बताना है सबसे कम एसिडिक कौन है इसमें से. सो वी नो दैट whenever the electron donating group is increased, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे. सो whenever इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इंक्रीज, क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर घटने लग जाता है. और वेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, तो एसिडिक करेक्टर हमारा बढ़ जाएगा. अब उस हिसाब से जरा देखो, तो यहाँ पे एकदम थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो बेटा. तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? ध्यान से देखो कि इन द फर्स्ट केस वी हैव एन OH ग्रुप, राइट? इन सेकेंड केस वी हैव एन NO2, बस फिनॉल लगा है. सेकंड में NO2 भी लगा है. इन थर्ड केस वी हैव एन OCH3 ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इन फोर्थ केस वी हैव NO2 ग्रुप, राइट? एंड इन द फोर्थ केस वी हैव एन OCH3 ग्रुप. सबका पोजीशन देखो. तो सबसे पहले NO2 आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड OCH3 आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. नाउ अब अगर ध्यान से अगर आप देखो, तो पोजीशन देखो बेटा. तो एक लगा हुआ है OCH3 मेटा पोजीशन पे, और एक बार OCH3 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे. सिमिलरली एक बार NO2 लगा हुआ है मेटा पे, और एक बार NO2 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे. सो हम सबको पता है कि जब भी मैं इसकी बात करूं, तो पैरा पे ज्यादा आसरिक होता है, राइट? सो अब आपको उसी हिसाब से बताना है
कि एसिडिक कैरेक्टर में पैरा पे ज्यादा एसिडिक है कि मेटा पे ज्यादा एसिडिक होगा। NO2 वाला तो ज्यादा एसिडिक है, वो हमें पता है, बिकॉज विड्रॉइंग ग्रुप जब भी लगता है तो एसिडिक कैरेक्टर हम लोगों का बढ़ जाता है। लेकिन इसको उल्टा अरेंज करना है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा बेटा वो बी होगा। बी, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज मच मोर एसिडिक। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? दैट इज अ पैरा पे जब ये डोनर ग्रुप लग गया है। मतलब जब पैरा पे जब भी कोई ग्रुप लगता है, चाहे वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाने वाला ग्रुप हो या एसिडिक करेक्टर घटाने वाला ग्रुप हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब अगर मुझे पता लग गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जस्ट उसको रिवर्स कर देना है। तो जब आप रिवर्स करोगे तो क्या आंसर आने वाला है? दैट इज ऑप्शन बी। तो बी होगा हम लोगों का वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन। चलो, इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा, इसी तरीके के क्वेश्चंस को तुम लोग को सॉल्व करना है ध्यान से। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे जीओसी में, तो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे रेजोनेंस पे, उसके इफेक्ट पे। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व यहाँ पे करने हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही वाली चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, कि जब भी क्वेश्चंस अगर हमारे पास आता है, तो हमारा वो क्लियर होना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है। डबल बॉन्ड पे पूछ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पे पूछ रहा है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ना रेजोनेंस पे आने लगे हैं। तो रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। एनी डाउट यू कैन आस्क। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ पोल हेयर, यू नीड टू फिल, राइट एवरीवन। Everyone need to fill this poll. Fill, everyone.